Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Can you see the lecture on the screen? Yes, miss. Okay. बेटा हमारी आज इंशाल्लाह चैप्टर 4 we will complete page number 131 exercise 4D. Okay, page number 131. Ahmed Raza, page number 131. I am writing page number 131. Okay. Yes, class. Factorize each of the following expression completely. Very easy and very interested topic. Please pay attention and put your interest. 45x square minus 81x5. In previous classes, we solved the question according to the formula. But in exercise 4D, we will do something different. Like we will take out the common and simplify the terms, okay? I will teach you today how to take common. How to take common. You know, student, we take common those terms which are present in both terms, okay? Just like ये देखिए आप now 45 and 81 are common multiple of 3. 45 और 81 दोनों किस टेबल में आते हैं? Are both comes in table 3. So I am taking 3 as a common because ये दोनों 3 के टेबल में भी आते हैं और 9 के टेबल में भी आते हैं. हाउ? हम लोग इसको 9 के टेबल से भी कर सकते हैं. वी कैन सॉल्व इट बाय द हेल्प ऑफ 9. लाइक 9 5 45 and yes class 9 9 81. Like this, students. 9 9 I am taking common 9 because these both numbers are the multiple of 9. 9 5 45 and 9 9 81. अगर आपको कोई confusion हो तो please पूछ लीजिएगा. Here x is also on both sides. Here we have x square and x. So I am taking only x is common, x power 1. I am taking x power 1 as a common. And the term which I am taking common, ये common कहलाता है, okay? The term which I am taking common outside the bracket, I also write in denominator inside the bracket. ये देखिए, इस तरीके से हम इसको common लेना कहते हैं. Here 81 x y and inside I am writing same terms. The term which we take common as the outside, we will write in denominator in the bracket. Like now 9 1 9, 9 5 45. Here x square mean we have 2x. Students, आपको मेरी आवाज आ रही है? अलीशा, अहमद रजा? Okay. Yes, miss. Okay. ये से कट हो गया. Here we have on numerator हमारे पास 2x है, नीचे 1x है, 2x से 1x कैंसिल. 9 1 9, 9 9 81. x कैंसल्ड x. So अब हम इसको सिंप्लीफाई करें. Now simplification we have finally got the answer. 9x we will write as it is outside the bracket. Inside the bracket we have 5x minus 9y. आप बताइए क्लास, इसमें कोई कंफ्यूजन? इज देयर एनी कंफ्यूजन? अहमद रजा, फोकस ऑन द लेक्चर, डोंट यॉर्निंग. यस, इसमें बताइए कोई कंफ्यूजन आपको? यस अहमद रजा. ईशा? No, miss. अहमद रजा बताइए बेटा. रिपीट कर दूं क्वेश्चन? शुड आई रिपीट दिस? ओके. Question number 1.
पार्ट ए, you will take out common लेंगे हम इसमें, and you can see that both numbers are the multiple of 9. ये दोनों किस टेबल में आते हैं? 9 में. So I am taking 9 as a common here, and you can see x is present on both sides. X square mean 2x and x mean 1x. So the common number which is present, common term which is present on both sides is x power 1. X की power on both side है. Now write the same terms inside the bracket. हमने inside bracket में same term लिखेंगे and divide the common मिस term. आपकी आवाज कट रही है. Hello, Alicia, can you hear me? Now, आप जो बाहर common term लिए, the term which I took common, write in denominator. हम इसको denominator में लिख देंगे. अब ये 9 1 9, 9 5 45. Here we have 2x. मिस X square means 2x. Yes, Ahmed. Yes, class. Sorry, it's a technical issue. Wait. Now, let's move toward the next question. अब हम next question की तरफ चलेंगे. Part B. Part B we have 39xy minus 15x squared z. Yes, class. Both numbers are common in, both numbers are the multiple of table 3. ये 3 में आते हैं. Like, I am writing 3 here. 3 1 is 3, 3 is 9, and 3 5 is 15. And x is also present on both sides, so I am writing x power 1. Inside the bracket, I am writing the same terms. This is the way in which, by which you can get common. X, y, and in denominator, you will write outsider term. Here, just like this. आवाज आ रही है मेरी स्टूडेंट्स? कैन यू हियर मी क्लियरली? अलीशा, अहमद रजा, रोशान, हलीमा, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? हलीमा, कैन यू हियर मी? x square z upon 3x. Yes, class. Is there any confusion? मिस आवाज नहीं आ रही. हेलो, अभी भी आवाज नहीं आ रही? अहमद रजा, आवाज आ रही है? रोशान, मिस आवाज नहीं आ रही. हेलो हेलो, रोशान, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस, क्लास. Question number B. I am telling you 3x is common in both sides, and inside we will write 3 9 x y. मेरी आवाज नहीं आ रही. हेलो क्लास. मिस आपकी आवाज कट रही है. बेटा थोड़ा टेक्निकल इशू है ये. 3 9 x y upon 3x. minus 15 x square z. X square means 2x. मिस नहीं आ रहा. स्क्रीन नजर आ रही है? कैन यू सी द स्क्रीन? स्टूडेंट्स, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? 3 1 3